Okay, Assalamu alaikum, dear students. I hope everybody is able to join. I can see 13 or 14 participants, and I think that's your strength. Could you please confirm in the chat box that I'm audible to you? Yes, ma'am. All right. Well, today we'll start with another topic, that is report writing, something that I think students of leadership management they have been doing for a long time. Is that correct? You do have like many reports to be written on many or within many course or degree specific subjects, right? But I'm just going to No, share. ma'am. अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं. We'll talk about it. You probably have written when you were at school or college, there was this incident reports were there where we used to write about the name of the event. या इवेंट नैरेटिव्स भी हुआ करती थी कि फन फेयर पे आप गए तो उसकी रिपोर्ट लिखें तो आप लिखते थे फन फेयर इस दिन को था इतने बजे था इतने लोग आए थे इसमें ये कुछ हुआ था और कंक्लूड करते थे. But this is not the kind of reports that we are going to discuss today. The reports that we are going to discuss today are a little different. They are something that you have done. You may be interested in doing so, but it's going to be a little different. I'm going to share with you the report writing booklet that I found very uh, fruitful for your level. Can you see my screen? It says Communications Report Writing by Janet Owens. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's a short booklet. I can, just show you like this. It's having multiple sections in it. There are contents given. I'll just show you. Now they're going to tell us about what is a report, right? What's the purpose and why we should be audience oriented. How do we plan it? What is the level of language? What kind of appropriate language should be used? And the writing process. Of course, we look at the structure as well, and some types could be there as well. I understand this is the booklet of like 30 pages or something, but it's very easily written. Once you read it with me, you will definitely understand. This introduction simply tells us that this is a practical guide to actually take you out of any anxiety that you have related to specific type of writing, that is report writing. We'll understand how to plan, how to write, how to revise. Remember that in writing skills or in writing specifically, we have a step by step stages available. We have pre-writing, writing, revision, editing, and submission. So we'll be looking at report writing in the similar manner. What is a report? Well, a report is something that has a structure and something that gives facts. It has detailing, it has motivation for the readers to make certain actions, to take certain actions. It could mean a number of things to different people, of course. Now, the kind of reports that you need to know and you need to write are the basic ones. We are going to learn about the formal writing, formal report writing. There is a basic difference between formal writing and informal writing. Formal writing requires you to use correct form of language in the correct manner, and it cannot have any mistakes whatsoever. Informal, on the other hand, could be personalized language. Usually हम इसको इस तरह से distinguish करते हैं कि formal is official and informal is personal. But within formal, we have informal letters as well, which are written within the organization, जिन्हें मेमोरेंडम्स वीक समटाइम्स कहा जाता है. उसमें इनफॉर्मेलिटी कैसे आती है? क्योंकि जब मैंने एचओडी को ईमेल लिखनी है, एचओडी ऑलरेडी नोज मी, आई नो हिम, तो हमें बहुत सारे फॉर्मल चीजों को हम स्किप कर सकते हैं. Sometimes, for example, these days we no longer write letters or applications. We are more inclined towards um, ईमेल राइटिंग. और रिपोर्ट राइटिंग में भी ऐसा ही है कि हार्ड फॉर्म अब हम बहुत कम शेयर करते हैं. अब हम सॉफ्ट कॉपी में रिपोर्ट शेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं. There are many other reasons why a report may be required.
And the point is, as a writer, we need to know the reason for what reason we are writing, और उसी के basis पे हम इसे design भी करते हैं. Now, the character of your report, it may be a varied thing, which means it could have multiple interpretations and levels attached to it. And defining its nature is one of the first challenges. Now, these are the questions that should come in your mind when you're writing a report. What am I really trying to do? What is the purpose of the report? Who is the audience? These three questions should directly pop up in your mind when you're writing a report. Now, this is only helpful for the initial stages. For the rest of it, you need to think about more. There is a top tip given at the left. Think of a report that you remember reading. Why do you remember it? If it was good, why was that? And if what it was bad, what irritated you? Think about how your report will be received. So I'm giving you 2 to 5 minutes to think about a report that you have read uh, at any point of your life. If you remember something good about it, then why? And if you don't remember something good about it, then of course why? दोनों का आपको मुझे रीजनिंग देना है. सोचिए और मुझे बताएं. जी. Anybody who would like to share? No, nobody wants to share. Hmm? Well, I can share an example with you. Yesterday, I was in an international conference. That conference is usually comes with a you can call it a report already. ठीक है. उस रिपोर्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की थी, but some of the information was not appropriately embedded. I believe there was more to it than they were. They accidentally or maybe intentionally left out. So what we need to learn is that we need to categorize the report, whatever and however we are writing.
These are the 4 points that one should establish before writing or after writing the report. And once you know what is the purpose and who's the audience for the report, you can add information. If it is in a response to a request for information, perhaps from a further, then usually the corrective and format is already decided by them and we will respond accordingly. If facts are being presented, we will be informing the reader and thereby straightforward classification. I think that is a leading report that we try to motivate us. If you are trying मैम to जी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी, डिस्टॉर्शन थी। दैट्स ओके समटाइम्स अगर इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा हो तो हो जाता है what about the rest of you, are you able to hear me? यस मैम। Okay. One of the other characteristics are that if you're trying to instruct your reader, then clear explanations are required. As far as the size is concerned of a report, depends. If there are two major approaches to report writing, short reports and long reports. Most of the times when we are writing the short reports, but long reports can be there as well. Now, report has to be concise, right? It should have clarity in it. It should have necessary information in it, and the length could be depends naturally on the structure, how the message is conveyed. Depend करता है कि report किस बारे में. Now, small reports are usually considered to be more to be those containing up to about 2,000 words. Medium-sized reports run to 2,000 to 5,000, and the long reports could be 5,000 words and more than that. The size of the report usually dictates how the work should be divided up. Okay. Now, if we talk about the structure, I'll just talk about the simple structure. रिपोर्ट राइटिंग के और बहुत से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. अगर आप किसी कंपनी के साथ किसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस ओपन करते हैं, तो ये आप पे भी डिपेंडेंट है कि आप रिपोर्ट राइटिंग का क्या फॉर्मेट रखते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं. A research report contains headings and sections which can be useful for all reports. The master template that follows can be adapted in different ways according to the nature of the report. Long reports can use the template in full. Now, this is the template they are given. A report will usually consist of all or some of the following sections. Sometimes आप इसमें से कुछ sections skip भी कर सकते हैं. First is title page. It's the first page of the large report, often with the title and the name of the qualifier, nature of the subject. They have given one example, fitting the pieces together, an actual learning set for staff. It will also usually state the author's name, which may be one or more people, a department, or the organization. You might have seen theses. In thesis, we have a title page. In researches, in reports, and even in your assignments. देखिए assignments भी एक टाइप की रिपोर्ट ही कर रहे होते हैं ना आप अपनी information को, तो उसका भी एक title page होता है. So they're talking about the title. The next they talk about that medium size short reports may have no little page but simply a heading at the top of the first page. The organizational logo, authors names and contact details are also often shown at the first page. ठीक है. फिर आ जाती है summary, जिसे हम synopsis भी कहते हैं, which is also called abstract, which is also called summary, और भी ऐसे इन sections के names हो सकते हैं, so they are talking about those. This is a brief synopsis of all the content of the report. In technical papers, that is called an abstract. So different types of writer में इनका different type of name हो सकता है. आपने sometimes कभी ना कभी कोई रिसर्च आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा, उसमें एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल राइटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च राइटिंग, तो उसकी बात होगी. नाउ द समरी इज एक्चुअली रिटन एट द एंड. ठीक है, यानी एक दफा जब आपने कर लिया है, आपने अपना रिपोर्ट बना ली है, जो भी एक्शन करना है वो कर लिया है, उसके बाद हम उसकी रिपोर्ट इंट्रोडक्शन लिखते हैं.
पहले बाकी सारे सेक्शंस लिखते हैं और उसके बाद इन सेक्शंस को आगे लेकर चलते हैं. ठीक है. Next important point is that the summary is an invitation to read the rest of the report, and although it is placed at the beginning, it is usually written after everything else. Then we have introduction, then we have objectives and methods. Introduction में आप क्या लिखते हैं? You provide the broad outline of the purpose of the document, the aims, and the stated are stated and put into context. Medium-sized reports also need a brief statement of intent. Shorter ones usually do not need this section. अगर आप एक short report लिख रहे हैं तो उसमें इस section की जरूरत नहीं है, but long report में it's very important. अच्छा, एक top tip दी हुई है. The auto summarize function in Microsoft Word is really handy tool that can save you time by creating good starting point for your summary. It can also indicate the quality of report structure. If the auto summary isn't very accurate, your report structure might need to be improved. So within Word, आप इस function को use करके भी अपनी जो report आपने लिख ली है section wise उसकी summary create कर सकते हैं. Then objectives and methods. What is going to be explored and recorded and how this is going to be done? Something that is written in objectives. You can have multiple objectives and you can use multiple methods as well. They have mentioned that medium-sized reports will section this as procedure and short report as task identification. अच्छा, remember, जब भी आप कहीं काम करने जाएंगे तो हो सकता है कि इसके अलावा भी उधर कोई names हो, तो आप वो भी देख सकते हैं. Then comes findings or results and then section. Findings or results में आप facts and findings को logical and clearer sequence में add करते हैं. For medium-sized and short reports, this section, when read with the conclusion, is likely to suffice. And then we have conclusion. Then recommendation and references could be there. References are where you used, if you have used somebody else's data, somebody else's research articles to back up your point of view, then those references would be here. एक tip दी हुई है for highly referenced reports. It is essential that you make full notes on reference material during your research phase. You will tear your hair out if you try to find them all at the end of the process. यानी साथ साथ अगर आप references बनाएंगे तो that is going to be much easier rather than end पर बैठ के बना रहे हैं तो उसके लिए आपको इस तरह से होगा कि एक दफा दोबारा सारा पढ़ना पड़ेगा. Then comes the appendix or appendices, which are the attachments. They could be surveys, they could be questionnaires, they could be material in the final section that is somehow some kind of documentation. तो वो आप वहाँ पे end पर लगा सकते हैं. As far as formalities are concerned, one important thing to remember is that the headings outlined in this chapter they indicate the sections of a formal report, and most report these sections may be named less formally. For example, the summary might be read by this report. The introduction could be the main priorities, or the finding and discussion paragraphs called the debate. The idea is that a tried and tested format is applied. तो innovation के नाम पे भी बहुत सारे institutions या workplaces headings को change कर लेते हैं. Now, the following excerpts are from a report written as a result of a board review of Crossroads and are used with their kind permission. Note the use of relevant parts of the framework. There was an additional section recommendation. The full report was 2,000 words. So this is a real report that has already been written. So we are going to read one of its sections जहाँ पर result को review किया जा रहा है of Crossroads. अब देखिए इसको केस स्टडी का नाम दिया हुआ है, टॉप पे उसका नाम लिखा हुआ है क्रॉसरोड्स केयरिंग फॉर केयरर्स, Stafford and Stockport board review. Why a review? The board of trustees organized or reorganized that it should set aside time to reflect on its own performance and functioning as a board. The key points, यानी जो debate है सीधा उस पे चल रहे हैं. The skill of the board were to be audited in self-assessment of skills. Appendix उन्होंने 1 को रेफर किया हुआ, यानी इसके बारे में आपने और इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो रिपोर्ट के एंड में ये अटैच्ड होगा, इसकी डिटेल अटैच्ड होगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं. This to be followed by an individual discussion questionnaire, appendix 2, to assert in the future direction. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चनर और उसका डेटा मिल जाएगा.
ठीक है, सेकंड अपेंडिक्स में these actions to be taken with awareness that the board should have a strategy for its own effectiveness in order to take the necessary steps to ensure the continuation of the excellent work of crossroads. Okay? Continued यानी इसके बाद भी इसमें बहुत सारी की प्रिंसिपल है, क्योंकि हम एक सैंपल पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ने की या लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. Then board members. All the board members took part. Their names and numbers were listed here. ये मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है ना, उसमें भी हम ये सारा कुछ इसमें ऐड करते हैं. द रिव्यू सेक्शन में जो हम लिखेंगे, conducted in accordance with the relevant sections in the NCVO's document, good governance, confidentiality was maintained. If requested, but otherwise all information provided was to be used as part of the material for review. An external resource was used to process the audit, facilitate the discussion meetings, and write the report. फिर the board members self assessment and skills, and then findings का section दिया हुआ है, then list of skills and conclusion दी हुई, और then recommendations. देखिए अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 के बारे में दिया हुआ. तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी पूरी रिपोर्ट का, जो मैंने आपको यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है. Now you have 5 minutes to read this section. This is available in writing section. तो chapter 1 इसका हमने complete कर लिया है. इसमें हमने स्ट्रक्चर और क्या क्या इसमें इंक्लूडेड हो सकता है उसके बारे में बात करिए. अब अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो उसमें पर्पस एंड ऑडियंस आ जाता है, तो उसको हम क्विकली देख लेते हैं. लेकिन उससे पहले आप इसको टाइप ऑफ रिपोर्ट, कैरेक्टर, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेलिटीज को 5 मिनट लिए इसको पढ़ लें. कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, गूगल क्लासरूम से आप इसे ओपन कर लें. कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछिए. ओके, आप पढ़ें तो 5 मिनट बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. If you won't have any questions, then I'll be asking some questions. Please read because this is the only time we meet. Important है कि मुझे आपका input मिलता रहे कि आपको समझ आ रही है कि नहीं.
जी बेटे, any questions? If you don't have any questions, that I'm going to ask you some question. Question is that what's the difference between medium-sized report and a short report? They've mentioned it somewhere. So what's the difference? मैम जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है इसमें हम जैसे टाइटल आता है, जस्ट इंट्रो आता है, या फिर मेन बॉडी और कंक्लूजन ऐड करते हैं. That's incorrect. Okay, आपके सामने लिखा हुआ है that medium-sized and short reports may have no title page but simply a heading at the top of the first page. ठीक है, हम सिर्फ heading और यानी the report could be about weather or some kind of leadership management workshop, and that some subtitle would be there or name of the organizer could be there. इसके अलावा जो important बात यहाँ पर ये है कि ये जो रेफरेंस स्टडी दी हुई है इसको आपने एक बार दोबारा पढ़ लेना है. Then comes purpose and audience. Reports are written for a variety of audiences, right? और उसमें purpose भी different हो सकते हैं. Some reports could be commissioned, which means that you're responsible to write ethically and responsibly because you are being funded by somebody else. And then there are certain ways and reasons for which reports fail. One of the most common reasons that why a report fails is omitting to identify why you are writing and who you are writing for. If you're not audience oriented, if you're not having clarity, if your purpose is not clear in the very beginning of the report would not be very, you can say, famous or accepted by the masses. Right? But this is the checklist that you should have with you when you're making sure that there is no chance of failure in report writing. First of all, be clear exactly who is commissioning the writer. ठीक है, जैसे आपने जब राइटिंग करनी है मोस्ट ऑफ इट असाइनमेंट्स के लिए करनी है, ग्रेडिंग के लिए करनी है, अगर कोई आपका FYP या कोई मिनी थीसिस या रिसर्च आर्टिकल होता है तो वो भी मोस्टली ग्रेडिंग के लिए होता है या पब्लिशिंग के लिए होता है. तो ये क्लैरिटी जब आएगी तो आप उस तरह से इसको लिख सकते हैं. Second point that should come to your mind is who is intended to read this, who is the audience for this report. Audience oriented होना is the most important among all other aspects. देखिए प्राइमरी सेक्शन के लिए मैं यही रिपोर्ट राइटिंग का सेक्शन ले जाऊं और इतना कुछ ले जाऊं तो that's going to be too much for them to handle. So it's important to be audience oriented and examples be relevant. And must precisely what right. तो उसको प्रॉपरली फॉलो करना बहुत जरूरी है.
involved in getting started. Sometimes हमें clarity नहीं होती, sometimes data पूरा नहीं होता, sometimes हम करना ही नहीं चाहते. I mean, ये सब चीज़ या बस नहीं. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. Hello, could you please confirm whether I'm audible to all of you or not? अभी आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी. चलिए ठीक है बेटी, फिर वो आपके एंड पे थोड़ा सा हो सकता है फ्लक्चुएट हो रहा हो. ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है कि हमें कोई काम दिया होता है लेकिन हम कुछ और ही सोचते रहते हैं, तो दैट कैन डिले और हिंडर योर एबिलिटी टू राइट effectively, and then you can feel a little bit overwhelmed and you feel like it's too much to handle, so that can hinder your mental statement to move forward. अगर आप ऐसी बातें सोचते रहेंगे तो फिर बंदा कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, तो ये उसकी बात कर रहा है. then mind maps are very friendly, और हमारे पास एक सॉफ्टवेयर भी है दैट्स कॉल्ड नोटबुक एलएम, गूगल वालों का है. वो बहुत हेल्पफुल है. आप जो डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं या कोई मटेरियल है आपके पास और वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप नोटबुक एलएम को देंगे तो वो एक माइंड मैप बना देती है, या सेक्शंस बना देती है, समरी बना देती है, फ्लैश कार्ड्स बना देती है. दैट कैन हेल्प. Now, mind maps are brain friendly. The brain stores information by associations in cluster, not in linear form. This is the reason why mind maps are easy to remember. They are very like spider graphs. A spider graph, sometimes called the semantic map, is a type of graphic organizer that is used to investigate and enumerate various aspects of a single theme. यानी जिसे infographics कहते हैं, आप उसे फ्लो चार्ट कहते होंगे, पाई चार्ट भी कहा जा सकता है, आउटलाइनिंग भी कहा जा सकता है, तो उन टेक्निक्स की यहाँ पे बात हो रही है. सो इफ यू ड्रॉ अ माइंड मैप लाइक दिस, देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन का अगर आप बना रहे हो, feeling overwhelmed, instability to get started, lack of knowledge and sleep. मोस्टली हमसे काम क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि ना तो हम इंटरेस्टेड हैं, हमारे पास कम मोटिवेशन होती है और नॉलेज की भी कमी होती है, इसलिए भी हमसे काम नहीं हो रहा होता. तो ये इस तरह का माइंड मैप आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. देन कम्स फियर. Sometimes the writers could be fearful, and in order to combat that, the best thing to do is to get a grip with the fear. आपको acknowledge करना है कि मुझे डर लग रहा है. उसके बाद lack of knowledge or understanding of the inability to get started. Then collection, organization, and do चीज आपसे भी अलग करें. Don't
मेरी आवाज ही नहीं आ रही। ओके, व्हाट्स द इशू? बेटे बाकी सबको भी नहीं आ रही? यस मैम, मैम कभी आती है कभी नहीं आती। कभी आती है कभी नहीं आती। मेरे एंड पे तो बेटे मैं वही इक्विपमेंट यूज कर रही हूँ जो हमेशा यूज करती हूँ। हो सकता है इंटरनेट में कोई इश्यू हो। वेल आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड इट एज वेल। If some of you are not able to hear my voice clearly, just follow the screen जिस पे मैं पढ़ रही हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डोंट बोर योर रीडर्स। और देखिए डूज और डोंट्स जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और आगे चल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अभी हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था। If you know your purpose, you can communicate better. If you have clarity, if you have background information, your arguments and recommendations could be intact and fruitful and productive. So you need to write it down. For example, because मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं तो I usually jot down my tasks so that I don't miss any. So that can be a mind map for me. ठीक है? उसके बाद आ जाता है appropriate language. Not of course collation रह गया। अच्छा, organization हो गया, collation is left. Decide on the conclusion and recommendations early in the collation of material and put them in at the bottom of your plan. Design headings and signposting for reader and lead them to your conclusion. Have a clear logical series of steps prepared before you begin to write that will make up your sections and that the reader can follow easily. This should be kept as brief and as clean outline. Remember your purpose and the report objectives and make sure that they are aligned to it. Now go ahead, read chapter number 2 and 3 for like 5 to 7 minutes. कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलेंगे। बेशक ये चैप्टराइजेशन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ही फोकस्ड लिखा हुआ है, तो ये इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, गो अहेड रीड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क। मैम आप पेपर्स पे कैसे क्वेश्चन देंगी, मतलब रिपोर्ट के से रिलेटेड? Again, the question could be related to the structure and the types. ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है। या पूछा जा सकता है व्हाट आर द रीजंस फॉर राइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। एक तो हो गया, ये इसको कहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें इसका स्ट्रक्चर बात करना पड़े, टाइप की बात करनी पड़े, लिमिटेशंस की बात करें। फिर अभी जो हम आगे हम एक सैंपल पढ़ेंगे, उसको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। आपको एक सिनेरियो दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि राइट अ रिपोर्ट ऑन इट। जैसे अभी एक एक्टिविटी होगी तो वो इसी सिनेरियो बेस पे होगी कि आपको मैं एक सिनेरियो दूंगी तो आपने रिपोर्ट लिखकर सबमिट करवानी हो। तो दोनों किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है ना आपका जो फॉर्मेट है आपके एग्जाम का, दैट्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक दैट इट हैज एमसीक्यूज एज वेल। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो कुछ इसमें लिखा है प्रैक्टिकली और एप्लीकेशन लेवल पे वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसे हैंडल कर सकें। ओके मैम। चलें, अब सेकंड एंड थर्ड चैप्टर को 5 मिनट एक नजर देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। कोई सवाल हो तो पूछ भी लें।
Okay, any questions from chapter number 2 and 3? Do's and don'ts हैं उसमें कुछ sections in that how procrastination can definitely kill your vibe, so you have to plan accordingly. Ji, any questions? No questions? No, ma'am. Okay, then comes the formality or the language that we need to be able to follow. The language has to be readability, readability honi chahiye usme. The language has to be appropriate. Good English needs to be showcased in it. And good English does not necessarily mean that it has to uh, be written in bookish language, or it has to be, uh, very dense, but it has to be formal. It should come across as a professional writer. For example, we would say to a child, be careful, a car is coming, not beware of an oncoming vehicle. Yet, when writing a report, somehow our preconceptions of what is expected of this kind of English too often turns out normal, sensible English into overbearing jargon and outdated formal English. So, what is this concept of, a good English? Yes, it is appropriate and plain English. यानी बहुत ज़्यादा jargon क्या होते हैं बेटे? Field specific terminologies. जैसे कि to put it this way, registers भी होते हैं और jargons भी होते हैं. Jargons में क्या होता है कि जो जैसे डॉक्टर्स हैं, इनके एक स्पेसिफिक jargons हैं. अब हमारे लिए कैंसर जो है वो एक टाइप का कैंसर होता है जो कि एक सिंड्रोम है और जिसकी क्योर लेवल जो है बहुत कम है. मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव एनी क्योर एंड द रेस्ट ऑफ देम दे हैव सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट. लेकिन जो डॉक्टर्स का jargon है उन्हें पता है कि वो ब्रेन ट्यूमर है, वो ब्लड कैंसर है. ब्लड कैंसर के लिए स्पेसिफिक नाम होता है, बोन कैंसर होता है, एक्सेट्रा. यानी मेडिकल jargons में डिफरेंट किस्म के नेम्स. लिम्फोमा है. ऑन्कोलॉजिस्ट जो होगा, डॉक्टर ऑफ कैंसर जो होता है, स्पेशलिस्ट होता है, वो अपने डॉक्टर्स के बीच में वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर को रेफर करेगा, वो जनरल कैंसर को रेफर नहीं करेगा. तो ये उनका jargon हो जाएगा. इसी तरह से जो टेलर्स होते हैं उनका अपना jargon है, टैक्सी ड्राइवर्स का अपना jargon है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग काम करते हैं या लाइक जो मैनेजमेंट में काम करते हैं उन लोगों का अपना jargon है. टीचिंग में अपने अपने jargon होते हैं. तो jargon अगर यूज करना भी है तो उसे सिंप्लीफाई जरूर करना है फॉर द कॉमन ऑडियंस. और चेकलिस्ट कौन सी फॉलो करनी है? विल रीडर्स अंडरस्टैंड द रिपोर्ट इजीली? अब लेट्स से मैंने एक रिपोर्ट लिखी है एंड आई हैव यूज्ड द वर्ड सिंटैक्स, बट मेरे जो रीडर्स हैं वो साइंस से भी हैं और लिंग्विस्टिक्स से भी हैं. अब सिंटैक्स का मीनिंग लिंग्विस्टिक्स में सिंपली है द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, लेकिन कंप्यूटर में इट इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. अब कंप्यूटर लैंग्वेज और किसी और लैंग्वेज के सेंटेंस स्ट्रक्चर में फर्क होता है. तो वो क्लैरिटी प्रोवाइड करना मेरा काम है एज अ राइटर, ताकि कोई भी इनअप्रोप्रिएट या एम्बिग्युअस टर्मिनोलॉजीज हमारी रिपोर्ट में ऐड ना हो. डू यू चूज वर्ड्स और फ्रेजेस कन्वे योर इंटेंडेड मीनिंग? हैव यू यूज्ड द राइट वर्ड्स एंड फ्रेजेस? Are you using unexplained abbreviations and acronyms? अच्छा, abbreviations और acronyms को यूज करने का टेक्निक होता है. जब हम अपने राइटअप में फर्स्ट टाइम, जैसे आपने नमल की जो एब्रीविएशन या एक्रोनिम है यूज करना है, NUML यूज करना है, तो फर्स्ट टाइम जब आप लिखेंगे अपने रिपोर्ट में तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस HN पूरा लिखेंगे. नेक्स्ट टाइम और इसके साथ ब्रैकेट्स में एब्रीविएशन नमल लिख देंगे. अब तीसरे पैराग्राफ में नमल आपने दोबारा लिखना है तो आप एक्रोनिम यूज कर सकते हैं. दैट इज द टेक्निक दैट यू शुड ऑलवेज follow. Then you have to look for any unique expression that you have used. Have you used 3 words when you could use 1? So substitution, omission, addition, revision आपने यहाँ कर लेनी है. Is there a more powerful and descriptive word you could have used? तो उसके बारे में देख लेना है. The key to good report writing is being appropriate.
knowing your audience, knowing the level of language, the technical language that they can handle, and you have to use it that way. Okay. Then readability tools are there, presenting your organization is there. So on one level, report writing can be exercised in branding a marketing tool to promote your organization, get a message across the circulate the good reports. Often signs and symbols are used. तो वो reports में आपने add कर लेना. And then comes the writing process. Stages हमारे वही है. Pre-writing, first draft, second draft, presentation, editing, circulation, and final review and proofreading. प्रीव्यू में हमारे पास क्या होता है, वी लुक एट द टारगेट ऑडियंस, ठीक है, जो हमने चैप्टर 2 में बात की है, हम उसके बारे में देखते हैं, प्लानिंग देखते हैं, और फिर हम फाइनली फर्स्ट ड्राफ्ट और सेकंड ड्राफ्ट को क्यूमुलेट करते हैं. फर्स्ट ड्राफ्ट जो है इट इज सपोज टू बी रिटन, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं. सेकंड ड्राफ्ट में हम क्या करते हैं, हम उसको कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन यानी कंप्लीट सेक्शंस को कंप्लीट करते हैं. Then presentation is everything. Instant attraction is required if you wish to encourage your readers to pick up the report and want to read it. So make your report look good. Choose an attractive cover, perhaps your organization's logo color. Use visual clues. Cross-reference can be used. Color pictures, infographics, graphs, and diagrams may be used. Check the white spaces as well, and then you can move over to the next stage. That is editing. You can edit the ठीक है. देखिए ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू में पढ़ा, अब ये प्रोसेस की बात हो रही है. उस ऑर्गेनाइजेशन के विद इन बहुत सारे चेंजेस भी हम बार बार कर सकते हैं. The following table looks at the dangers of editing as you write and of editing after you have written your material. Dangers of editing as you write, dangers of editing after you have written most of your material. अब देखिए पहले हम लेफ्ट पढ़ते हैं, dangers of editing of as you write. Over editing can become a major problem. Instead of producing good ideas, the brain locks onto the words and the patterns that they form. The writer is stagnant and policies and concepts. Over editing can change the original notions into something completely different, perhaps causing rewriting of other sections. This can mean that the whole report becomes a different animal than was intended, often with more work attached to it than was ever needed or expected. Editing as you go stops the flow. सबसे आसान तरीका ये है कि पहले एक दफा आप लिख ली, उसके बाद अब ये दूसरा जो सेक्शन है, by starting at the beginning you may rumble on a conclusion, convincing yourself of your own arguments. There may be tendency to be jumbled in your thinking. You may lose pathways in process which are harder to find in the end. Ideas can stuck up everywhere quickly but overlap or repeat themselves. Okay? So this comparison is to gather ideas, then collate them so far and then edit. You can make your own editing checklist, of course, for each report along these lines. Then they are talking about that purpose के लिए कौन से questions होने चाहिए, information के लिए, accuracy के लिए, images के लिए. देखिए sometimes बच्चे क्या करते हैं कि बहुत अच्छी रिपोर्टें बनाते हैं लेकिन images इतनी unclear, इतनी VGA फॉर्मेट में और इतने गलत तरीके से पोस्ट करते हैं कि सारे रिपोर्ट की जो लुक है वो खराब हो जाती है. तो पिक्चर्स इतनी वाइड और इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को तरीके से नजर आए. फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी अगर आपने हेडिंग का साइज 14 यूज किया तो थ्रू आउट 14 होना चाहिए लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन को. तो ये क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा, अभी आपको 15 मिनट दूंगी तो आप पढ़ लीजिएगा. उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ कमेंट्स, इफ पॉसिबल सर्कुलेट ड्राफ्ट्स ऑफ योर रिपोर्ट टू इंटरेस्टेड पार्टीज आस्किंग फॉर कमेंट्स, यानी आप पीयर रिव्यू ले सकते हैं, जैसे आप टीचर्स को सबमिट करवाते होते हैं और वो आपको फीडबैक देते हैं. For example, if the report was commissioned, you should send it the earlier draft to your commissioner, जिसने आपको फंड किया ताकि वो बता सके. अब देखिए टिप दी हुई है कि circulating a report for comments can often gain commitment to the report before its final issue. Then final review की बात हो रही है और इस checklist को आपने follow करना है. Report writers often have little time to allow for this phase. However, there is always space to ask yourself a few simple questions. Have you made correct connections? Ambiguities become obvious at this stage. Does your writing flow? क्या बहुत ही disoriented तो नहीं है?
Can you justify your ideas? How will you be perceived? Would you be willing to give this message to your reader face to face? How you imposed an unintended memory? ठीक है, imposed memory क्या होती है? अब ये exercise दी हुई है. Read the following passage quite quickly, then cover the text and answer the following questions. The checkout assistant had just shut down the till and put a closed sign across the aisle when a masked person appeared and ordered the assistant to hand over all the money in the till. Owner opened the till, the money was taken out, and the masked person ran away. The assistant phoned the police. What gender was the masked person? बता सकते हैं? चलिए मैं टेक्स्ट ऊपर कर देती हूँ. अब देखिए साथ उन्होंने आंसर्स भी दिए हुए ना, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं. तो the gender is not mentioned. Did the person demand money from the store owner? Yes. Did the assistant hand over the money? It is not made clear कि वो किस तरह से बॉक्स से बाहर गए. Okay. When we write, अब ये clarity provide करना as a report writer आपका काम है कि आप लिखें clearly कि किस तरह से पैसे उस बॉक्स से बाहर गए. ठीक है. When we write, we can impose memories on our readers. यानी हमारे माइंड में हमें लग रहा होता है कि हमने वो बात कह दी. हमारे एग्जाम में ऐसा होता है ट्विटिंग कि हमें लगता है हमने तो सब लिखा था, लेकिन जब एक न्यूट्रल रीडर या कोई और उसे पढ़ता है तो वो बात वहां क्लैरिटी से नहीं होती. तो उस इम्पोज्ड मेमोरी की वो बात कर रहे हैं, उसे अवॉइड करें. देन प्रूफ रीड इट. ठीक है. व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर रिपोर्ट यू डिजर्व अ रिवॉर्ड एंड देन कंटिन्यूस योर इम्प्रूवमेंट. ठीक है. सो ये बहुत एक ब्यूटीफुल बुकलेट है, इसमें सारा कुछ के सेक्शंस लिखे हुए हैं. आई होप आपको ये समझ आ गए. अब इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए. आपके पास 10 मिनट्स हैं. इसके अलावा फिर मैं एक क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ आपके गूगल क्लासरूम में अबाउट राइटिंग अ रिपोर्ट. वो रिपोर्ट आपने किस स्ट्रक्चर पे लिखनी है, जो स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है. ठीक है. ये हमारा स्ट्रक्चर है ना जो अभी हमने डिस्कस किया. लुक एट दिस स्ट्रक्चर. तो इस स्ट्रक्चर पर आपने वो रिपोर्ट लिखनी है. एक सिचुएशन में आपको लिख के दूंगी, उस सिचुएशन को आपने फॉलो करते हुए ये सेक्शंस बनाकर उसमें ये डाल दें. समझ गए बेटे? एनी क्वेश्चंस? अब आप इसे पूरी बुक को 5 से 10 मिनट पढ़ लें. मैं तब तक आपका वो क्वेश्चन पोस्ट कर देती हूँ और फिर उसके बाद आपने वो क्लास 12:10 पे या 12:05 पे खत्म होती है उससे पहले से अपलोड कर देना है. दिस विल बी अ क्रेडिटेड एक्टिविटी. अब बेटे कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो. नो मैम. ओके, करते हैं. ठीक हो गया बेटे. अभी पढ़ लो 5 से 10 मिनट, दोबारा देख लो. कोई बात मिस हो गई है क्योंकि मेरी आवाज का भी आप कह रहे थे कोई इशू है, उसको थोड़ा सा देख लें. तब तक मैं आपका क्वेश्चन पोस्ट कर देती हूँ. ओके मैम.
And remember कि headings को exact same आपकी situation पे भी depend करता है कि आप कौन सी headings add करना है. Read the situation that has been given is about a project leader और उसमें बहुत कुछ खराबी होगी उसके sections ये post पहले पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन Excuse me, ma'am. पूछे मैम वो मिड्स के मार्क्स बता देंगी? कि अभी तक डिपार्टमेंट ने मुझे कहा है आई एम नॉट अलाउड टू शेयर दे आर सेइंग दे विल गिव मी अ डेट वेयर आई हैव टू शो यू पेपर्स और उसी दिन बताऊंगा अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्टर ने बता दिया तो दैट्स अ वायलेशन ऑफ अ रूल मैंने फिर पूछा था आप लोगों ने जब मुझसे पिछली बार भी कहा ना आई डिड आस्क द कोऑर्डिनेटर एंड दे टोल्ड मी नॉट टू शेयर द स्कोर्स आर गुड आई कैन टेल यू स्कोर्स आप सबके अच्छे हैं Okay, ma'am. चले अब क्वेश्चन पढ़ लें अगर क्वेश्चन से कोई क्लैरिटी कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें जी बेटे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें देखिए लेट सबमिट करवाएंगे और फिर बाद में परेशानी होगी इसलिए जो कोई सवाल आए अभी दिमाग से जो भी मतलब पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो सवाल आए तो पूछ लो ताकि कोई इशू ना हो और आप आसानी से अपनी असाइनमेंट कर सकें
मैम ये जो आपने जहाँ पे एक्टिविटी भेजी हुई, जहाँ पे एड वर्क लिखा हुआ है, यहीं पे आपको सेंड करनी है ना, सबमिट करवानी है? ऑब्वियसली इट इज, यानी रेलेवेंट पोर्टल पे अगर कोई और असाइनमेंट है तो उसमें अपलोड नहीं कर देनी, लेकिन जिस सेक्शन का नाम लिखा होगा ना, रिपोर्ट राइटिंग क्लास एक्टिविटी 8 मई, उसमें आपका यस सवाल मैम, होगा। लाइक आपने जैसे सेंड की हुई है ना एक्टिविटी, और उसके साथ लिखा आ रहा है कि एड वर्क। जी जी, वहीं पे करना है। ओके मैम, थैंक यू।
मैम जी बेटे। मैम ये जो आपने रिपोर्ट लिखने के लिए दी है इसको हम हैंड रिटन लिखें कि वर्ड में वो पीडीएफ बना के भेजें? आपकी चॉइस है। इफ वर्ड पे लिखना इजी है तो वर्ड से मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे। हैंड रिटन आसान है तो हैंड रिटन कर दे। इट्स जस्ट कि जो हैंड रिटन लिखेंगे अगर उसमें मल्टीपल पेजेस है तो एक पीडीएफ बना के स्कैन करके अपलोड कर दे। ओके मैम। और मैं आप बेटे बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो। अगर मतलब कोई इंटरनेट स्लो है तो आप तसल्ली से पहले लिख लें और लास्ट 5-10 मिनट में वापस ज्वाइन कर लीजिएगा इफ इंटरनेट इज क्रिएटिंग एन इशू। मैम वो एक्चुअली यहाँ पे ना वो पता नहीं कोई शायद हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है तो मेरा घर उसके करीब ही है, तो ऊपर से वो F-16 वगैरह गुजरे हैं तो शायद इस वजह से ना वो सिग्नल्स का इशू है। ठीक है वो इसीलिए कह रही हूँ कि इसके बारे में परेशान ना हो, रिपोर्ट पे फोकस करें। मेरे घर के ऊपर से भी अभी बहुत सारे प्लेन्स गुजरे हैं, काफी सारे। ओके मैम, थैंक यू।
दीदी अभी 12 बजे तक सबमिट करवानी है। जी बेटे।
Okay, Pite, please keep working and you can upload by the time ends. I'll be ending this meeting. We no longer need to be here. 5 से 7 मिनट रह गए तो आप इट इसको अपलोड कर दीजिएगा. कोई क्वेश्चन है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं. मैम जी जी. मैम आप पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन देंगी एप्लीकेशन बेस? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. और anybody else, Pite? No, ma'am. Challenge. That will be all then. I'll see you next week. Allah Hafiz.